Can you see me now? Yes, we can see you. Okay, good, good. So thoda sa bataiye, tell me about the students. What do they expect to hear? And how clearly can you hear me? Can you hear me clearly, very clearly, or just a little bit? Yes, we can hear you very clearly. Very comfortable, yes. And other than that, we are Bloomfield Hall School, and the one who contacted you here is Mohammed, and he's the vice president of our own school science society, which was just recently established. And we are actually quite lucky to have you as our first, because part of our science society's part was to encourage science in our school, and one of the ways you do that is by workshops and lectures by esteemed guest speakers such as yourself. So, what we're expecting would be a sort of an insightful talk into physics, something that would really, spark something of spark the curiosities of our minds. And I'm already familiar about what you're gonna be presenting. It's about the history of physics in general, right? So we're very interested to hear that. So, Baki, I think I can hand it over to you now. Thank you. Okay, thank you. Good. Now I know who you are, where you are. You're in Peshawar, right? Yes, we're in Peshawar. Okay, good, good. So what I will do is not talk a lot about the history of physics, but rather the physics which has changed our world and the simple principles that lie behind it. Those principles I will demonstrate using animations, and I will show you how you can also operate those animations, but we'll do that later. Then I will demonstrate here some experiments, very simple experiments, but those which bring out principles that are so utterly important that we couldn't think of a world that doesn't use them. Okay, so look, we live in the 21st century, and the way that we live is completely different from those who lived 100 years ago. In fact, even the world that we live in is so different from the world that your parents and their parents lived in, that we have to ask, how is this possible? And the answer is, it's because of the speed with which the principles of physics have been applied. Now, the principles of physics are only a few, and the concepts are also only a few, but it is the creative application of those principles that has made the modern world possible. One principle that I'm going to talk to you about is energy. What is energy? It's not so easy to define, but it is something, some mysterious thing that keeps changing its form. It goes from one form, takes another form, becomes something else, and keeps shifting from one form to the other. But at the end, it has to be capable of causing change. So if there is energy, then something will change. Okay, to give you an example, if I release a ball from here it has potential energy. As it falls, it will gain kinetic energy. Kinetic energy is energy of motion. Okay, when it falls to the ground, you'll hear a sound, tang. If it falls on metal, a good, long, loud sound. So part of that energy has been converted into sound energy. The ball will get a little compressed because of friction, heat will be produced, and so that kinetic energy has now been changed into other forms of energy, sound, of heat, and if it hits a matchstick, you can get it to hit a matchstick, well then, there'll also be light coming out of this. But
I think it would be good if we saw an animation, and I'm going to show you that animation. It is 5 minutes long, but it's a very nice animation. अच्छा, यहाँ सब लोगों को उर्दू समझ आती है ना? हाथ उठाएं, हाथ Yes. उठाएं. अच्छा, उर्दू आती है ना? ठीक है, बस. आती है। अच्छा, ठीक है. अच्छा, तो अब हम ये एनिमेशन देखते हैं. सबसे पहले ये एप्लेट लीजिए जिसमें एक साइकिल को चलाया जाएगा. उस साइकिल के पहिए के घूमने से ये जनरेटर घूमेगा. इस जनरेटर से बिजली पैदा होगी और उस बिजली से फिर ये बल्ब जलाया जाएगा. तो शुरू करने के लिए सबसे पहले इसे कुछ खिलाना पड़ेगा. खुराक के बगैर कैसे इसमें इतनी तवानाई आएगी? तो ये लीजिए, इसके चलने से जनरेटर घूमा, जनरेटर से बिजली पैदा हुई, और अगर हम चाहें तो इसको एनर्जी सिंबल्स यहाँ दे सकते हैं. तो चलिए दोबारा से करते हैं. फीड मी. तो अब ये कीमियाई सूरत में तवानाई इससे निकलती है, हर की तवानाई में तब्दील होती है, बिजली की सूरत में फिर यहाँ पहुँचती है, और फिर रोशनी यहाँ बाहर निकलती है. रोशनी खुद तवानाई है. यहाँ पर बहुत कुछ है जिसके साथ खेला जा सकता है. तो चलिए अब हम पन बिजली तैयार करते हैं. तो इधर जाकर अब इस नलकी से पानी बाहर निकलेगा. उस पानी से, अब वो पानी हर की तवानाई है, उस हर की तवानाई को फिर इस रोटेशनल मोशन में तब्दील किया गया. ये यहाँ पर घूमता है, इसके घूमने से फिर बिजली निकलती है, और उस बिजली से फिर रोशनी, और रोशनी खुद जैसा कि मैंने आपको बताया तवानाई है. लेकिन हम यहाँ हर की तवानाई भी पैदा कर सकते हैं. तो चलिए इधर नीचे जाते हैं. इसको क्लिक करने से अब देखिए ये पंखा चलेगा, और पानी के जोर से बिजली पैदा हुई, बिजली से हर की तवानाई दोबारा पैदा हुई. और ऐसे है कि कभी कभी यहाँ से अगरचे ज़्यादा तो हर की तवानाई पैदा हो, लेकिन कभी कभी इसमें गर्मी भी निकलती है, क्योंकि ये पंखा मुकम्मल तौर पर एफिशिएंट तो नहीं होता. और देखते हैं इधर क्या है. तो चलिए इस केतली पर आते हैं. अच्छा, इसको हम यहाँ से गर्म कर सकते हैं. तो इस स्लाइडर को ऊपर करें तो यहाँ ये पानी गर्म होने लगेगा. उस गर्मी से यहाँ से भाप पैदा होगी. भाप के जोर से ये पहिया घूमेगा, और पहले की तरह यहाँ बिजली पैदा होगी. अच्छा, हम चाहें तो इस गर्मी को दोबारा गर्मी में तब्दील कर सकते हैं. तो इधर आएं, इसको क्लिक करें. इसको क्लिक करने से यहाँ पर पानी है. उस पानी को अब ये बिजली गर्म कर रही है. यहाँ पर हरारत पैमा, एक थर्मोमीटर मौजूद है, और देख लीजिए यहाँ इसका दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है. गोया कि हमने यहाँ पर गर्मी को दोबारा गर्मी में तब्दील किया. अब चलिए इसको रोकते हैं, और अब देखते हैं कि क्या हम धूप को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सूरज से जो तवानाई आती है वो रोशनी की सूरत में है. वो रोशनी फिर इस सोलर पैनल के ऊपर लगती है. उस सोलर पैनल से बिजली पैदा होती है. वो बिजली फिर पानी को गर्म करती है, या हम चाहें तो इससे पंखा भी चला सकते हैं जैसा कि यहाँ हो रहा है, या अगर हम चाहें तो इसको दोबारा रोशनी में तब्दील किया जा सकता है. और ये देख लीजिए कि जब बादल नहीं होते तो खूब बिजली पैदा होती है, और जब बादल होते हैं तो ये धीमा पड़ जाता है.
یہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سے آپشنز ہیں جس کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے. دوبارہ ادھر جائیے تو اس کو آگے کریں ادھر, اور چاہیں تو ہم اس کو بند بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب ایسے ہے کہ یہ تو خواہ کا چل رہا ہے, لیکن اگر اس کو ہم پہیے کے ساتھ جوڑیں تو پھر یہ دیکھیں کہ ایسے ہو سکتا ہے یا ایسے ہو سکتا ہے. بہرحال یہاں کھیلنے کی بات ہے, یہاں ایکسپلور کرنے کی بات ہے. ویل آئی ہوپ یو انجوائڈ دیٹ اینیمیشن. دیکھیے یہ آپ خود ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں نیٹ سے. جسٹ گو ٹو کولوراڈو فزکس ایپلیٹس, یہ گوگل میں ڈالیں, وہ یو آر ایل اس کا خود بخود آ جائے گا, اور اس میں بہت سے پیرامیٹرز ہیں جس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اس کو استعمال کرنے سے انرجی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کی جو مختلف شکلیں ہیں, ہاں اس میں ایک ہے جس پر کچھ کم زور دیا گیا, دیٹ از کیمیکل انرجی. کیمیکل انرجی از دا تھنگ دیٹ مووز یور کار. آپ پیٹرول بھرتے ہیں, پیٹرول جب اس میں جلتا ہے تو اس کے اندر ایک کیمیکل ٹرانسفارمیشن آتی ہے, اور جو انرجی آپ کے پیٹرول میں بند ہے وہ پھر اس گاڑی کے پسٹن کو چلاتی ہے, وہ پسٹن پھر ٹائر کو چلاتا ہے, یوں گاڑی آگے بڑھتی ہے. اچھا, انرجی کی اور بھی قسمیں ہیں. دیکھیے بنیادی جو آپ سمجھ لیجیے کہ ڈیفینیشن ہے نا انرجی کی, کہ یہ وہ چیز ہے جس کی کل مقدار نہیں بدلتی. So this is called the law of conservation of energy. So you actually define energy as something that is conserved. It can go from this form to that form to that form, but at the end, it has to be capable of causing change. اچھا, بس میں اتنا ہی کہوں گا. بس ہاں, ایک آخری بات یہ کہوں گا, آپ لوگوں نے ڈارک انرجی کا نام سنا ہے؟ ہاں, ڈارک انرجی ایسی چیز ہے جس کو اب تک ہم استعمال تو نہیں کر سکے, نہ ہی اس کو پوری طرح سے سمجھ سکے, لیکن یہ وہ انرجی ہے جو ہماری کائنات کو بہت تیزی سے پھیلا رہی ہے. تو دیکھیے میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ فزکس ایک ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ایوالو ہوتی ہے, ارتقا پذیر ہے, اور ہمیں ڈارک انرجی کی پوری خبر نہیں آج, لیکن ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد 100 سال بعد ہو جائے. ہمیں اس وقت اس کے صرف یہ اثرات دکھائی دیتے ہیں کہ کائنات تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے. اچھا چلیے اب ہم ایک اور کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں. تو یہ بات بہت پرانی ہے, آج سے کوئی 2500 سال پہلے یہ سوال اٹھا تھا. سپوز یو ہیو این ایپل, آئی cut that apple in half, then I have half an apple here, half an apple there, then I cut it in half again and half again and half. Will this process ever stop, or will it keep going forever? Now you could make the argument that it'll keep going forever, or you could make the argument that that process will somewhere go and stop. If it stops, then the smallest thing that there is called an atom. So the Greek philosopher Democritus, he said that the smallest piece of anything is an atom. So that word came from Greek. Well, today we know that apples are not fundamental. That in fact, in our world, everything is made up of elements. Each element is made of atoms, and there are something like 110, 120 elements. Actually, we keep making new elements. The interesting thing is that if you look in your chemistry book, you will see the periodic table over there, which has got maybe 100 elements in it. But
because we have these big particle accelerators, we now have enough energy. देखिए, I'm using the word energy again. We have enough energy to create new kinds of atoms. And in fact, we create very heavy atoms. The heaviest one, I don't know what it is right now, but it has now it has an atomic number of protons, something like 130 or so. So the point is that everything is made of atoms, and all chemistry is dependent upon atoms. Water is H2O. Methane is CH4. We are made up of atoms. Those atoms then join together and give you molecules. The molecules are of many, many different kinds, but ultimately, all of life is because of atoms and the molecules produced by those atoms. I'm now going to show you how we can make atoms, and there'll be an animation. It's not all kinds of atoms. There's certain restrictions over there, and we'll out what those restrictions are, but first you have to see this lovely animation. And by the way, this is also one of the animations over here. So now you're going to see the animation on making atoms. चलिए हम एटम बनाना सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तमाम अनासिर को इस पीरियोडिक टेबल में जमा किया जा सकता है। यहाँ पर जो सबसे हल्का आंसर है सो हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और फिर इधर सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह। यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन हैं, इधर न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक प्रोटॉन इधर रख दिया, ये हाइड्रोजन का आयन बना और ये मुस्बत बरक़ी बार रखता है, पॉजिटिव है, इसलिए कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का हामिल है। अच्छा, अगर मैं इधर एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो क्या ये टिकेगा? नहीं, ये नज़दीक जाकर टिक गया। ये पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है। तो जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन डाला तो ये इधर चला गया। क्या मैं इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डाल सकता हूं? दोबारा मैंने डालने की कोशिश की तो चलिए ये भी पहले ऑर्बिटल में चला गया। अब ये नेगेटिव आयन हो गया। क्या मैं इसमें एक मज़ीद प्रोटॉन डाल सकता हूं? कोशिश करता हूं, ये देखें। लेकिन ये दरअसल मुस्तहकम नहीं है, ये अनस्टेबल है। इसको स्टेबल करने के लिए एक न्यूट्रॉन में डालता हूं। हाँ, इससे स्टेबल हो गया। अगर एक और न्यूट्रॉन डालूं तो क्या ये टिक जाएगा? ये भी बन गया। तो ये दोनों आइसोटोप्स हैं हीलियम के। एक हीलियम जिसमें एक न्यूट्रॉन है, एक हीलियम जिसमें दो न्यूट्रॉन है। क्या मैं मज़ीद न्यूट्रॉन डाल सकता हूं? डालने की कोशिश करूं तो ये फिर अनस्टेबल हो गया। लिहाजा चलिए इसको मैं वापस कर देता हूं यहाँ पर। अब हमारे पास न्यूट्रल एटम बन गया हीलियम का, जिसमें दो प्रोटॉन हैं, दो न्यूट्रॉन हैं और दो इलेक्ट्रॉन हैं। लिहाजा हमने हाइड्रोजन और हीलियम दोनों बनाना सीख लिया। तो आगे चलते हैं। अब एक प्रोटॉन मैं इसमें मज़ीद शामिल करता हूं। ये लिथियम बना, लेकिन लिथियम का ये आइसोटोप यानी कि जिसमें 3 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ये मुस्तहकम नहीं है। तो एक न्यूट्रॉन मैं इसमें डालता हूं। हाँ, तो अब 3 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये पॉजिटिव आयन बना क्योंकि 3 प्रोटॉन और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए एक इलेक्ट्रॉन मैं इस वाले ऑर्बिटल में डालने की कोशिश करता हूं, मगर वो उधर टिका नहीं, ये बाहर वाले ऑर्बिटल में चला गया। अच्छा, अब लिथियम हमने बना लिया। क्या लिथियम में मैं मज़ीद एक न्यूट्रॉन शामिल कर सकता हूं? डालने की कोशिश करता हूं। हाँ, ये
टिक गया, यानी कि 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन भी ठीक। क्या एक और भी डाल सकता हूँ ना? ये नहीं चला। अब ये मैं वापस कर देता हूँ इधर। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एक मज़ीद प्रोटॉन इसमें शामिल करते हैं, बेरिलियम। अब सबसे पहले तो मुझे बेरिलियम न्यूक्लियस को स्टेबल करना होगा। इसमें इस वक्त 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन हैं, तो चलिए मैं ज़्यादा न्यूट्रॉन इसमें डालने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये चल गया, लेकिन ये न्यूट्रल एटम तो नहीं है, इसमें मुझे एक इलेक्ट्रॉन शामिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, और ये दूसरे ऑर्बिटल में चला गया। क्या अब बेरिलियम में मैं मज़ीद न्यूट्रॉन्स डाल सकता हूँ? डालने की कोशिश करते हैं ना, ये नहीं चला। वापस इधर बेरिलियम से आगे निकलते हैं, एक मज़ीद प्रोटॉन डालता हूँ, ये बन गया बोरॉन। अब ये पॉजिटिव आयन है, लिहाजा हमें इसको एक इलेक्ट्रॉन खिलाना होगा, और अब ये न्यूट्रल एटम बन गया। क्या मैं इसमें मज़ीद न्यूट्रॉन्स डाल सकता हूँ? हाँ, ये चला गया। एक और कोशिश करता हूँ ना, ये नहीं चला। वापस इधर प्रोटॉन में एक और डालता हूँ, तो ये कार्बन बन गया। इस कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं, आयन है, लिहाजा एक और इलेक्ट्रॉन से ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब क्या मैं इसमें न्यूट्रॉन मज़ीद डाल सकता हूँ? हाँ, ये भी चला गया। ये नहीं चल सका। अब ये कार्बन 14 बन गया, और कार्बन 14 जैसा कि आप जानते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग में बहुत ही कारआमद एटम होता है, जिससे हम आसार कदीमा की उम्रें जान सकते हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद एक प्रोटॉन डाला जाए तो ये बन गया नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा न्यूट्रॉन्स मांगता है, तो ये अब स्टेबल हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी डाल देते हैं, और ये इधर चला गया। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आती है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए फिर हमें एक और न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें 8 प्रोटॉन हैं और 8 न्यूट्रॉन, और जाहिर है कि हमें एक और इलेक्ट्रॉन देना होगा ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। इसके बाद हम एक और प्रोटॉन इसमें डालेंगे, ये बन गया फ्लोरीन। फ्लोरीन को स्टेबल करने के लिए हम एक और न्यूट्रॉन डालते हैं, इससे नहीं बना काम, एक और डालते हैं, चलिए ये हो गया काम। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं, और अब ये देखें कि ये न्यूट्रल हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन बने इसके? जितने प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन हमने 9 डाले हैं, इलेक्ट्रॉन भी 9 हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास बस एक ही प्रोटॉन रह गया, जिसके बाद ये ट्रे खाली हो जाएगी, वो भी हम डाल देते हैं इसमें। तो ये बना नियॉन। स्टेबल है, मगर देखते हैं कि एक और न्यूट्रॉन से भी ये स्टेबल रहेगा। बिल्कुल, वो भी चल गया, और आखिरी इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह गया, और ये इधर चला गया। तो अब ये लेवल भर गया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और ये एनर्जी लेवल भी भर गया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसे रेयर गैस एटम कहते हैं, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, उखाड़ना बड़ा मुश्किल काम है। यही वजह है कि ये किसी कीमियाई अमल में शरीक नहीं होता। अब ये तस्वीर जो है जिसमें हमने इस तरह के दायरे बनाए हैं, ये महज हमने अपनी सहूलत की खातिर बनाए हैं। असल में इलेक्ट्रॉन एक धुएं की सूरत में फैला हुआ होता है न्यूक्लियस के गिर्द। जहाँ ये धुआं ज़्यादा घना है, उधर एक इलेक्ट्रॉन के होने का इम्कान ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, वैसे वैसे ये इम्कान कम हो जाता है कि आपको कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक, okay, good. So I hope you got a sense of how the different elements are different from each other.
how you build up atoms starting from hydrogen and then moving all the way upwards. Well, of course, this is an animation. This tells you which nuclei can be stable or which break apart from each other. All this science is very, very important for the world that we live in. So, for example, if you want to produce nuclear energy, you look for those nuclei which will break up. When they break up, they release a lot of energy. And here I will give you the most famous formula of physics, which says that you can convert mass into energy. If I could, I can't always do it, but if I could convert 1 kilogram of any substance, of matter, into energy, well, that will be enough to run all the cars in the world for 1 full week. It's so much energy in there. By the way, our sun works on this principle of converting mass into energy, and it does so by what is called nuclear fusion. That's nuclear energy. And it consumes every minute 600,000 tons of hydrogen. So that tells you how much energy there is in the sun. It's because of the sun that we are here. You could also ask the question, where did all these elements come from? And here, look, I have so many other things to tell you that I'll just spend 1 minute telling you this. In the beginning, that is at the time of the Big Bang, or just a little bit after the Big Bang, there was only hydrogen and helium. But then from hydrogen, there formed the stars. The billions of stars in every galaxy, and there are billions of galaxies. But among them were the very, very heavy stars. And every star eventually runs out of fuel. When it does that, it has to die. Now, some stars, they die a quiet death, just fade away. Other stars, they explode. They're called supernova. Supernova. Nova means star, and this is super. When they explode, then in that process, there's so many neutrons around that they form all the elements. In fact, you and I, all the carbon, the nitrogen, the phosphorus, every element that is in my body was formed in some supernova explosion some billion years ago. What a lovely idea, isn't it, that we are all made up of stardust. Okay, so now these were animations, and I encourage you to go and play around with them. You learn chemistry this way, you learn some physics. Of course, this is just an introduction, and to get really serious about it, you have to study it systematically like is done in your book. So this is just a motivation for that. But now I'm not going to show you animations. I'm actually going to show you experiments which are going to tell you about some physical principle. And the first one will be about how light goes through different media. So suppose that this is water. So this is air over here and water here. Suppose I have a flashlight torch, and I shine light towards this. Well, it will go here, and then it'll go out in the air. So if you are a swimmer and you are carrying a flashlight, then your light will reach over here.
So starts from here and ends here. But if that ray of light is here, so it reaches this at a smaller angle, then it will just go along this, and if it is bigger, if this angle is still smaller, then it will be reflected. Now, the particular angle at which it gets reflected is called the critical angle. And actually, this is something that we're going to show you right now with an experiment. Why is this important? Well, for hundreds of, one of the reasons is that this is how your internet reaches your home, because light or waves, light is waves, you know that. Light or waves, they reflect. So now what you see is how you can essentially make a pipe. So before I show you this experiment, the way that electricity reaches your home is through a wire. It's a copper wire. One electron pushes the other, and so a current flows in the wire. How does your internet signal reach your home? There, a fiber optic cable is used. So what happens in a fiber optic cable is this. See, it has to be capable of bending. So let's say it bends like this. Here comes a ray of light or the internet signal, which is also a kind of light, but it's it has a different frequency, or you could say a different color. And then it reflects, total internal reflection, goes here, 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 and finally reaches you over there. So it comes from here and exits here. In other words, don't bend to, you can light or any kind of waves bend. And that's what we're going to show you now. Okay, so first we will show the video and then we'll show this. Yeah. So let's see the video first. And then we'll show what this is. सबर Hello? The video is laggy. The video is what? It's lagging. Could you share the video on WhatsApp? यार वीडियो ठीक नहीं चल रहा उधर. अच्छा चलो इधर ही से दिखा लेते हैं. Okay, so sorry about that, the video didn't play, but now
we'll show you that with an actual demonstration. I thought the video would be clearer, but okay. So here what we have is a laser. You know what a laser is? Light. It puts out light of a definite color. In this case, this is a red laser. And now you will turn this on, but first show us the laser. इस पर unfortunately we don't have all angles over here, but okay. So okay, so water is being poured in. Now the plug will be open, so now the water is coming out. And you can see that the laser light is just following the water which is pouring out. So as the level decreases and there's less pressure, the arc in which the water is falling, it gets more and more inwards, and you can see that the light is still following it. How beautiful. How beautiful. At some point, the light will not follow the water. I think we're getting close to that point. Closer, 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 closer. This is, you can still see it, still see it. Very nice, very nice. Okay, now we are losing the light, I think. No, it's still there. Oh, now we have lost it. Now we have lost it. Okay, good, 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 good. So, you see, this is not a very high-tech experiment. Well, of course, the laser is something new. It's the laser is only 50 years old. But you see, the idea is that light will go through, it will go up, down like this, totally internally reflect and follow this pipe. You know, the best thing is for you to make this experiment yourself, because then you will really learn how to do things. I'm going to show you another experiment, and this is about waves and how you can create waves that don't travel. These are called standing waves. Okay, so look, you can have a wave that's going like this, or you can have a wave that's going like this. But if one wave goes and is reflected, then what happens is that it doesn't go forward. The net result is that nothing goes forward and nothing goes backwards. So there's no energy transport in one direction. Or you could say that an equal amount of energy goes this way and an equal amount of energy comes this way. What we're going to show you over here is there's going to be a source of sound here. So when you will see you will see the effects of that. Now in here there is going to be something that you will enjoy watching. I'll tell you as you watch it. चलिए शुरू करते हैं. So there's compressed air in here. ये जरा ऊपर करके दिखा. There's उस तरफ उस कैमरे को. There's compressed air in here. This air is going to blow through this tube, and now you will see what you will see.
beautiful. Okay, now, acha. So there is a sound wave that is going through this tube over here. It is being reflected from one end and coming back. And if you adjust, इसको अब हाँ on कर. Okay. Right. Let's play. Play. You see, the frequency of the sound is being changed. As the frequency of the sound changes, you have standing waves which are being produced at different places within this tube. There, so now this is very nice and clear. You see one wave here, another here, another here. It goes all the way till the end of the tube. If this is turned off, if you turn this off, then you see that the pattern has disappeared. There's no up, down, no up, down. Okay, फिर से चलाओ. Yeah, beautiful. So obviously there is more gas in some places, less gas in other places, and that is because these waves are interfering with each other. So I hope all of you can see this, and what a beautiful experiment, what a beautiful demonstration this makes. ठीक. Okay, good. The properties of waves are absolutely crucial for everything that there is in the world. So how are radio waves reflected, how they are detected, all this depends upon our understanding of waves. How we I mean, there's nothing in the world that doesn't require knowledge of waves. Okay, so I have given you just a brief look at some of the interesting and important concepts in physics. And now I think I will wait for your questions and we can talk about anything that you like. So I hope you will have many questions. Okay. Well, Does anybody have any questions? what you wanted, what you Sean.
You can ask any sort of question relating. Any other question? अच्छा तो सर फर्स्टली तो वी हैड अ क्वेश्चन के आपने शुरू में यू मेंशन डार्क एनर्जी राइट Uh-huh. so you said that dark energy was the force and the energy that was causing the universe to expand lekin we've also learned that the law of conservation of energy says that you can't create or destroy energy so where is this dark energy coming from Ah, that's a great question because we don't know. Dark energy, unfortunately, we can't interact with. So you can't convert. We don't know of any way of converting dark energy into kinetic energy, into mechanical energy of any kind. So, unfortunately, well, not unfortunately, it's good. There have to be questions left over in physics that we are still investigating and should investigate until we get the answers. So we don't know what dark energy and dark matter are. But we know that they are there because of the indications suggesting that. So dark matter we have never seen, but we see the gravity that it exerts upon planets and upon galaxies. Dark energy also, as I said, we can't convert into any other form of energy because it's, I don't know the reason for that, but we see its effect. That effect is there in terms of its being, in terms of its causing the universe to expand faster and faster. ठीक है अच्छा also when you in that animation of yours जब आपने वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में डाला तो इलेक्ट्रॉन ये क्यों नहीं रहा था aren't electrons and protons attracted to each other so you think a electron would be so attracted to the it would fall into the nucleus so why doesn't it just lovely गिर क्यों नहीं question. जाते Okay, very good, very good. तो देखो ऐसे है ना कि suppose that this is the nucleus, positively charged. So why doesn't an electron which is negatively charged simply fall down into the nucleus? People didn't understand this earlier. It was known that there was a center of positive charge. It was known that there were electrons inside the atom because you could knock the electrons out and then you could, in fact, even make a stream of them. So, of course, there are electrons and of course there are positive charges, protons. Why don't they simply join up, is your question. And so, in the early days of atomic physics, it was thought that the reason is the same reason that the Earth doesn't fall into the sun. See, the Earth is heavy, the sun is heavy, two heavy things attract each other, so the Earth should fall into the sun, but it doesn't. Why doesn't it do that? Because it's going around. Because of it going around, centrifugal force. And that centrifugal force then pushes the Earth away from the sun, and so fortunately we have not been baked. Okay. So that reasoning was applied to the electron in an atom as well. And this is what is called the Bohr model of the atom. But in fact, it wasn't until the invention of quantum mechanics that we knew the correct answer. The correct answer is hidden within this thing which is called the uncertainty principle. And that says that if you try and confine an electron or any particle, doesn't matter, it could be any particle, in a small space, then it'll move very violently. The more you confine it, the more it'll try to, go back and forth.
which means that it will gain energy. So if an electron was to get close to a proton, the uncertainty principle would not let it do that, because then this electron's energy would shoot high into the sky. That's the reason. Now, all this can be put across very concisely, beautifully in what is called the Schrödinger equation. When you solve the Schrödinger equation in quantum mechanics, you get to know everything about that atom. You can know that this atom, this electron, can be in this state or that state or that state, and no other state than that. So, yeah, that's a good question. Why doesn't the electron go into the proton? Because it's forbidden. और दूसरा सवाल ये था कि स्टेबल होने के लिए उन्हें न्यूट्रॉन्स क्यों चाहिए, वो अनस्टेबल क्यों हो जाता था जब हम ज्यादा न्यूट्रॉन्स डालते हैं, ज्यादा प्रोटॉन्स डालते हैं? हाँ, अच्छा, तो ये भी अच्छा सवाल है। भाई न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बन जाओ फिर। ये दो अच्छा, इनको नाम दिया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को। ये एक ही तरह के पार्टिकल हैं, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन की एक किस्म प्रोटॉन है, दूसरी किस्म न्यूट्रॉन है। इन दोनों का मास तकरीबन बराबर है, कुछ 1.5% का फर्क है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स भी होती है। अब जरा ये सोच लो कि अगर कोई एटम हो, कोई न्यूक्लियस हो, मिसाल के तौर पर चलो ये एक ऐसा एटम जिसमें 4 प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, चलो इधर कर दिया। अब प्रोटॉन को दूर धकेलता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, और इसमें ढेर सारे प्रोटॉन है, तो फिर ये टूटता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं टूटता कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, गोया के न्यूक्लियॉन और न्यूक्लियॉन के बीच में एक फोर्स अमल करती है। इसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इस न्यूक्लियर फोर्स को समझते समझते 50 साल लग गए, लेकिन अब हम न्यूक्लियर फोर्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और हम अब ये जान सकते हैं कि क्यों आप सिर्फ इतने ही न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर भर सकते हैं। इसकी वजह थोड़ी सी टेक्निकल है, वो मैं नहीं समझा पाऊंगा। इसको न्यूक्लियर फोर्स का सिमेट्री कंपोनेंट कहते हैं। तो जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है तो न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, बशर्ते कि बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स ना हो, क्योंकि फिर इनके बीच में ये रिपल्शन भी होती है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का फिर एक लंबा लेक्चर बन जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊंगा आपको कि जैसा कि हीलियम की 2 किस्में हैं, हीलियम 4 और हीलियम 3। तो हीलियम 3 में 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, जबकि हीलियम 4 में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये बड़ा ही स्टेबल न्यूक्लियस है, ये इतना नहीं है। तो जब इनकी तादाद बराबर हो जाती है तो उसको मैजिक नंबर कहते हैं। नहीं, बराबर नहीं, लेकिन खास बराबर भी हो सकती है। मैजिक नंबर्स
will go up till 28 actually. Anyway, this is much more stable than this is. That is because of the nature of the nuclear force. اور یہ بھی تھا کہ جب آپ اسی ایٹمک ماڈل میں جب آپ الیکٹرانس ڈال رہے تھے تو پہلے اس نے آربٹ میں 2 ڈال دیے تو تیسرا اس میں کیوں نہیں گیا, تو تیسرا الیکٹران پھر باہر کیوں چلا گیا؟ بھائی یہ بھی اچھا سوال ہے. اب یہ کہ 2 سے اس کا پیٹ کیوں بھر گیا, یہ سوال ہے نا. تو اب اس کو بھی سمجھتے سمجھتے بڑا وقت لگا ہے, اور اس کا کوئی جواب نہیں ماں سوائے کوانٹم, وہ جواب جو آپ کو کوانٹم میکینکس سے ملتا ہے اور جو شروڈنگر ایکویشن حل کرنے سے سامنے آتا ہے. تو دیکھیں کیمسٹری میں ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ پہلے شیل میں 2 الیکٹرانز ہوں گے, پھر اس کے بعد اگلے شیل میں 8 ہوں گے, پھر کتنے 10 ہوتے ہیں وغیرہ. تو یہ باتیں جو ہیں وہ اگر اس کی بنیاد دیکھی جائے تو یہ شروڈنگر ایکویشن سے نکلتا. لیکن دیکھیے ہمیں شروڈنگر ایکویشن کا تو ابھی پتہ چلا نا, یعنی کہ 100 سال پہلے پتہ چلا. اس سے پہلے ہمیں پتہ تھا کہ پیریوڈک ٹیبل میں کچھ ایلیمنٹس ہیں جو بہت ری ایکٹیو ہیں, جیسا کہ سوڈیم ہے, پوٹیشیم ہے, اور کچھ ہیں جو بالکل کسی ری ایکشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں, جیسا کہ ہیلیم, نیون, آرگون, کرپٹون, زینون, جو ریئر گیسز کہلاتی ہیں. تو کسی کو اس وقت کوانٹم میکینکس نہیں پتہ تھی, تو ابھی کی بات ہے. لیکن 200 سال پہلے تو یہ پتہ تھا کہ ان ایلیمنٹس کی یہ صفات ہیں. کیوں کا نہیں پتہ, لیکن یہ ایک ایمپیریکل بات تھی کہ سوڈیم بڑا ری ایکٹیو ہے. وہ اگر آپ پانی میں ڈالیں تو ایک دم پھٹ پڑتا ہے اور اسے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بن جاتا ہے, بیس بن جاتا. یہ اس وقت خیال یہ تھا کہ یہ ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ بناتے ہیں جس کو ویلنس کہتے ہیں, اور مختلف ایٹمز کی مختلف ویلنسی ہوتی ہے. ویلنسی کا سبب نہیں پتا تھا, لیکن یہ چیزیں پہلے سے لوگوں نے, کیمسٹس نے جان لی تھی. فزکس نے بعد میں آ کر اس کی توجیہ پیش کی. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ بھی تھا آپ نے جو E=mc² کا جو ایکویشن مینشن کیا تھا, ہاں, تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ماس کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا الٹ بھی ٹرو ہے کہ ہم انرجی کو ماس میں کنورٹ کرنا پاسبل ہے, کر سکتے ہیں؟ ہاں ماس انرجی میں بالکل کر سکتے ہیں. اس انرجی سے ہم میس بالکل بنا سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر دیکھو یہاں سرن کی بات ہوئی نا, تو سرن میں ایک پروٹون اگر یوں آئے, اس پروٹون میں ڈھیر ساری انرجی ہوتی ہے. ایک پارٹیکل میں اتنی انرجی ہے کہ ایک مچھر کے انرجی کے برابر ہے. مچھر بہت بڑی چیز ہے, آپ چھوٹا نہ سمجھیں اس کو. دس ہیز دی انرجی آف اے فلائنگ مسکیٹو. اچھا, اس کے سامنے اگر آپ نے کوئی سا مٹیریل رکھا, کوئی سا بھی, ڈزنٹ میٹر واٹ, تو سینکڑوں کیا ہزاروں دوسرے نئے ذرے اس میں سے نکلیں گے. یعنی کہ جو
एनर्जी इस प्रोटॉन में थी वो मास में तब्दील हो गई, और जितनी ज़्यादा एनर्जी आपकी होगी उतना ही ज़्यादा मास बनेगा, उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स बनेंगे। अगर इसको आप स्लो कर दें तो बजाय 1000 पार्टिकल्स निकलने के 200 निकलेंगे, या फिर 10 निकलेंगे, या 2 निकलेंगे, या कोई भी नहीं निकलेगा अगर उसकी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो दूसरे पार्टिकल्स बना सके। अच्छा, वैसे अभी तक आपने लेक्चर में उसके बारे में नहीं बात की, सर्न के बारे में, टाइटल का भी हिस्सा था, तो आप और बता सकते हैं उसके बारे में? हाँ हाँ, तो सर्न दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये देखिए 2 मुल्क हैं, एक इधर फ्रांस, इधर फ्रांस है, इधर स्विट्जरलैंड है, जिनीवा शहर इधर है। ये एक्सेलरेटर गोल है, इधर मैंने गोल तो नहीं ड्रॉ किया। दिस इज 27 किलोमीटर्स। अच्छा, मजे की बात ये, मैं यहाँ रहता था और जिनीवा यहाँ, मैं साइकिल पे यहाँ जाता। नीचे, मेरे नीचे ये रिंग था, है, जिसमें प्रोटॉन्स गर्दिश करते, वेरी वेरी हाई एनर्जी प्रोटॉन। इसको बनाने में कोई 20-25 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए। क्यों बनाया? इसलिए कि हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की असलियत जानना चाहते हैं, यानी कि जो सबसे छोटे से छोटे जर्रे हैं वो क्या हैं, वो दूसरे जर्रों के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, और जो हमारी मैथमेटिकल थियरीज हैं इनको समझने के लिए उन्हें हम टेस्ट किए जाते हैं, जिससे बहुत सी नई बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि दुनिया में, पूरी कायनात में सिर्फ 18 किस्म के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल्स कहलाते हैं। अच्छा, ये जो अब तक हमारा इल्म है उन तक है। क्या उसके अलावा कुछ हो सकता? CERN will be used to test that, is being used to test that. जब कायनात बनी आज से कोई 13 अरब साल पहले, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, ये किस हालत में थी और ये किन मराहिल से गुजरी इससे पहले कि सितारे बन सके और फिर सितारों की गिर्द सैयारे घूम सकें, ये सब कुछ हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नॉलेज के ऊपर मुनहसर है। तो जो अर्ली बिग बैंग कॉस्मोलॉजी है उसको टेस्ट करने का ये एक बड़ा अहम रास्ता है। और भी बहुत से फ़ायदे हैं। फ़ायदे आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनेट का पूरा निज़ाम है वो यहीं से शुरू हुआ, इसलिए कि इतनी ज़्यादा इसमें डेटा प्रोसेसिंग होती है और वो इतनी जल्दी होनी चाहिए कि इसके लिए बिल्कुल नित नए तरीक़े ईजाद करने पड़े। उसी से ये इंटरनेट वजूद में आया। We are taking a few questions. Could you wait a bit? Okay. Assalamu alaikum. I am one of the students there, and I just want to ask about the ideology and the possibility of the existence of parallel universes. Sorry, I couldn't hear you properly. What, could you repeat your question? I want to talk about the ideology and possibility of existence of parallel universes.
the ideology and the possibility of parallel universes. Of existence like that. You know, uh, the idea of parallel universe invented, there are certain problems in the interpretation of quantum mechanics. Quantum mechanics is a lovely subject. I use it all the time. And it gives the right answers for any question that you ask it. But there is a very deep level at which we do not understand quantum mechanics. And I don't want to go into the reason for that, but this is what led to the concept of parallel universes. Not everybody agrees that such a thing is possible. I am not an expert in this, but I am not attracted to the idea of the parallel universe. If it's parallel and I cannot access it, भाई मुझे क्या पता कि उधर क्या हो रहा है? जब तक मैं उसे राब्ता ना कर सकूं, कोई मेरी कम्युनिकेशन ना हो सके, तो फिर उसके होने और ना होने में कोई फर्क ही नहीं मेरे नुक्ते नजर से. तो as a very practical person, I say that nice idea, but it's not important. मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन वो तो जिन भूत के बारे में भी आप कह सकते हैं कि जिन है कि नहीं. मैं मुझे क्या है जिन हो कि ना हो? कभी देखा है जिन? No, I don't care. We have a little one who wants to ask a few questions. Go on. So why isn't the Large Hadron Collider not square or a rectangle? Because if it has 4 corners and when particles reach on every corner at that point, they again get a boost of the same power of energy. Can you speak a little slower and speak into the microphone? थोड़ा आहिस्ता बोलो, हाँ? हाँ. हाँ. Yeah, say it again. Why isn't the Large Hadron Collider not square or a rectangle? Because if it has 4 corners and when particles reach on every corner at that point, they again get the boost of the same power of energy which boot up their speed, or on each corner after getting energy boost, they bounce back with more power and collide. Okay, I get your question. So you're saying that the Large Hadron Collider should be like this, is that right? Yeah, that's what I'm trying to say. Okay, good. Now, you know, the problem with that is that if I follow this, I can go very fast, but then I have to stop. And then I have to start again, move very fast, stop, start again, and so forth. Now, every time I change my speed, any time that I either increase or decrease my speed, I radiate energy. You can't escape that. And therefore, a lot of energy would be wasted if you were to start. Recording stopped. If you were to start and stop, start and stop, start and stop. In fact, even when you go around, even when you go around in a circle, you are changing your direction, and so you are radiating energy in this way, and you're losing energy. So the best thing is not to change your direction, but go straight. So go from here and stop here, or whatever. So in this way, you don't change direction. This is what is called a linear accelerator, LINAC, linear accelerator.
Linear accelerators are much cheaper to make. They're more, you don't lose energy because of going around in a circle. I mean, this is bad, but this would be worse. This would be best. The problem is that you can't get very high energy particles this way. See, what happens with this is each time a particle goes around, it gets a kick. And so it gets kicked to higher and higher and higher energies. You can't do that over here. Another question one of our audience members asked was that why did the light change its direction when it changed the medium? Okay. See, light is light always wants to travel in a straight line. Yeah. If I hold a laser in my hand and you look at the laser light that goes out, it's going in a straight line. The problem is that when some other medium comes in between, then light has to accommodate that medium. Now, what that means is that effectively light is traveling at different speeds in the vacuum and in glass or water or whatever other medium there is. Now, light always likes to economize on time. You see, some people like to economize on money, right? Save money. By which a lot of people work. But light likes to save in going between point A and point B. And this is what is called Fermat's principle. So if light starts out from here, and this is water beneath and air over here, then it will take the path that takes the least time. Let me draw it this way. So it starts here, ends here. It will not go on this path, because this path actually takes less time. Isn't that interesting? That somehow the light knows it's got to, even before it leaves here, it knows, the light knows that this is not the right path. This is the right path. Yeah. So there's another one of the participants in the meeting wants to ask a question. Majid, you can ask a question. Assalamu alaikum. Could you hear me? Can you hear me? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, फिर से कहो. Can you hear me? If you speak, I will be able to hear you. Okay. I just wanted to ask a question about the CERN. You told that it's about 27 kilometers. So is there a possibility in the future that scientists would build a larger particle accelerator? And if so, what would be the benefits of it? In fact, I just read that they are planning to, they've now created plans
for an accelerator which would be 80 kilometers, and it would again be between these two countries, France and Switzerland. It is not yet approved because it will take some huge amount of money, and maybe something like $100 billion. So where that money is to come from is to be seen. But it will be done with the purpose of getting to know the Higgs boson better, to see if there are what are called supersymmetric particles, and to look at other things called axions and so forth. So if things go according to plan, then by the year 2085, this will be completed. So what is it now? 2025. So in 60 years, it will be ready. I'm not going to be around, but maybe you will see it. That's all. That's all. No, we had another question. Somebody was asking about black holes and black hole singularity. Okay. What, asking what about it? Yeah. He wanted a sort of an You can just come in. I can't hear you. Wait a minute. हाँ, फिर से कहो. Yeah, okay. Ask a general discussion about what it is related to black holes. Yes, I can. You want to know generally how black holes are formed, or is there any particular question about black holes? General. Okay. So the original idea goes back 200 years when people, actually a scientist by the name of Laplace, he asked the question, he says, look, I throw something up and it goes up, it comes down, and the faster I throw it, the longer it takes to come down, and now the question is, can I throw it fast enough so that it never comes back? That's the escape velocity. And so he calculated the escape velocity and then said, okay, suppose light had mass, then could there be an object which is so small and so dense that even light would not be able to escape from it? Now that idea didn't get anywhere. But then in 1916, Einstein came up with his general theory of relativity, which among other things says that light will be affected by a gravitational field. So any heavy object will affect the direction in which light moves. And when Einstein wrote down his equations, he predicted how light would bend while going around the sun. That prediction turned out to be exactly correct, and Einstein became very famous. Well, he rightly became very famous for this reason. Okay, but then, Einstein's equations are quite difficult to solve. In fact, there was a time when they said that only 5 people understood those equations, other than Einstein. Well, now, of course, general relativity to our, that's a separate matter. However, after that came people who were able to
the equations that Einstein had written down, and they came across a solution which, after a certain point, every star, if it was massive enough, would collapse and zero volume. So imagine a star which is this big, which is 100 the diameter of the Earth, but collapses, it becomes one single point. All the mass of that entire star is concentrated in that one single point, and that is what is called the singularity. Okay, so is a very peculiar thing, because look, if this was the star and this over here is the point, that means everything around this is empty space. So in fact, a black hole is empty space, except that it's space with curvature in it. And that'll take me too long to explain. But I'll tell you, black holes are very fascinating. And now we know a lot about them. In fact, we even can watch them collide with each other. And this was the great discovery some 6 years ago, when we actually saw two black holes colliding in the sky. Well, they had collided 1400 million years ago, but we saw their effects 6 years ago. That's all. But thank you. Okay, good. So we're all done. Is that all? So we just, on behalf of everybody in the room who took this session and the part of the Zoom meeting, we'd really like to thank you for taking out the time to give us this very insightful and it was a very fruitful lecture, I think. Okay, good. And you should go to that website, the University of Colorado website, which I told you about, the animations, and enjoy it for yourself over there. Definitely. Okay, bye-bye. Yeah. Thank you. Bye. Bye. Tell them to wait.